Hello students, very welcome to all of you. So today in sequences and series, we are going to move ahead to the next part of the topic. That is, we are going to learn a new type of progression that is nothing but harmonic progression. Short form is HP. We have already seen two types of progression, arithmetic progression and geometric progression. So next you write down harmonic progression. So let us first write down the definition. I'll explain with the help of example. So लिखो a sequence T1, T2, T3 and so on up to Tn is said to be in harmonic progression if 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3 and so on up to 1 by Tn are in arithmetic progression. So what does the definition say, students? Any sequence is said to be in harmonic progression if the reciprocal of that sequence is forming an arithmetic progression. That is what the definition of harmonic progression says. Let us understand this definition by taking down one example. Okay, chalo write down example likh lo aap ek. Now say for example, let us take the sequence 1 by 5, 1 by 10, 1 by 15, 1 by 20 and so on, it continues. This sequence will be said to be in harmonic progression if and only if the reciprocal of this sequence is forming an arithmetic progression. So let us take the reciprocal of this sequence. तो इसका reciprocal क्या होगा? 5, 10, 15, 20 and so on. This should be in arithmetic progression. So how do we identify this sequence is in arithmetic progression? We will find out the difference between any two consecutive terms. अभी आप देखो ये first term है, this is T1, this is T2, this is T3, this is T4. Now you subtract and observe T2 minus T1, so 10 minus 5 is 5, 15 minus 10 is also 5, 20 minus 15 is also 5. तो इसमें जितने भी consecutive terms है सबका जो difference है वो same है. So therefore, this sequence is in arithmetic progression and therefore this given sequence is in harmonic progression. So harmonic progression is dependent on arithmetic progression. Chalo, note down with the help of an example. Very important है this definition. एकदम simple है. कोई भी sequence harmonic progression में कब होगा? जब उसका reciprocal arithmetic progression में होगा. It's very simple to understand. चलो note down till here with the help of example, then we'll move ahead. ये भी note कर लो चाहिए तो note down this also. Questions based on harmonic progression are generally solved by taking the reciprocal of the terms. ये भी note भी लिख लो आप ये. तो write down till here first of all. ठीक है. Now one more thing I will tell you. अब इसको मैं रब कर देता हूँ. अब मैं लिख के देता हूँ आपको. Start writing in your notebook. नोट के बाद भी लिख सकते हो. After the note you write down. मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. Now Tn का क्या फॉर्मूला recollect students? Tn का फॉर्मूला is a plus n minus 1 into d. This Tn का फॉर्मूला is for arithmetic progression. So therefore Tn का फॉर्मूला 1 upon a plus n minus 1 into d हो जाएगा. This is for harmonic progression. तो आपको क्या करना है? Examples कैसे करने हैं हमें यहाँ पे? If we want to find out nth term for harmonic progression, it's very simple. We will find out the nth term for arithmetic progression. और जो arithmetic progression का nth term होगा उसका reciprocal हमें लेना है. That will be the nth term for harmonic progression, where a stands for the first term and d stands for the common difference. So please note down this formula also. ये AP का है और ये HP का है. AP का मिल गया तो HP का automatically मिल जाएगा. उसका सिर्फ हमें reciprocal लेना होता है. Please note down this.
Now let us move on to the types of means. मीन्स निकालना, मीन निकालना मीन्स एवरेज फाइंड करना होता है. So there are three types of means that we are going to learn. Let us see them one by one. So the first type of mean is called as arithmetic mean. Write down, notebook में लिख लो, arithmetic mean. If three numbers x, y and x, a and y are in arithmetic progression, then capital A is called as arithmetic mean of x and y. And capital A का formula होगा x plus y by 2. So if there are three numbers x, a and y and they are in arithmetic progression, then capital A is called as the arithmetic mean of x and y. और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, कैपिटल A is equal to x plus y upon 2. इसके ऊपर एक बॉक्स डाल लो आप. अब ये फॉर्मूला कैसे आया दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, x, a and y are in arithmetic progression, so therefore see what will happen, a minus x will be equal to y minus a, difference same रहेगा, so therefore this a will be shifted over here, so a plus a, 2a is nothing but equal to y plus x हो जाएगा. And so therefore capital A will be nothing but equal to y plus x by 2 हो जाएगा. That is how we get the formula of capital A. चलो note down if you want. ये formula हमें याद रखना है. So this is the first type of mean that is called as arithmetic mean बोलते हैं हम इसको. Now second type of mean is called as geometric mean. If there are three numbers x, g and y, and if they are in geometric progression, then capital G is called as the geometric mean of x and y. तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, g square is equal to x into y. वहां से हमें मिलेगा g will be nothing but equal to under root of xy. तो ये फॉर्मूला है, so just put a box over this, g square equal to xy, or you can say g equal to root xy. Write down this. Now in this one more thing you need to remember over here, इसमें ये जो x and y है, हाँ तो लिख लो ब्रैकेट डाल के, here x and y should be both greater than 0, or x and y, x comma y should be both less than 0. x and y जो है या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ऐसा नहीं चलेगा, बोथ शुड बी पॉजिटिव और बोथ शुड बी नेगेटिव. दैट इज द कंडीशन ऑन इट. नोट डाउन. अब ये कैसे मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मैंने आपको अरिथमेटिक ए का कैपिटल ए का फॉर्मूला करके बता दिया. दिस यू रिमेंबर एज इट इज. चलो ये आप देख लो, बता ही देता हूँ. Now they are in geometric progression. So geometric progression, so what happens? Ratio constant रहता है. So what will happen? Therefore, g upon x will be equal to y upon g. This will be equal. So therefore, cross multiply करेंगे तो we get g square equal to xy, and see how we get g square equal to xy. चलो write down till here. ये कंडीशंस भी लिख लो, दे आर इंपॉर्टेंट वंस. कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ मीन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन. इफ द थ्री नंबर्स x, h and y are in harmonic progression, then capital H is called as the harmonic mean of x and y, and जो capital H का फॉर्मूला है that is nothing but equal to 2xy upon x plus y. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. अब ये कैपिटल H का फॉर्मूला है 2xy upon x plus y, वो कैसे मिला? Let us see this. What is saying? x, h and y are in HP. So therefore from here 1 by x, 1 by h and 1 by y are in arithmetic progression. ये AP में होगा. अच्छा AP में होगा तो डिफरेंस कांस्टेंट होगा. तो 1 by h minus 1 by x is equal to 1 by y minus 1 by h.
this minus this is equal to this minus this होगा. So therefore what do we get? Shifting करेंगे तो ये हो जाएगा 2 upon h is nothing but equal to 1 by y plus 1 by x. अब ये दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे तो x plus y upon xy मिलेगा. Now we will cross multiply. तो कैपिटल H will go over there. देखो ये स्टेप के बाद यहाँ पे देखो h is equal to 2xy upon x plus y. ये कैपिटल H उधर चला जाएगा, ये xy ऊपर आ जाएगा तो 2xy upon x plus y is equal to capital H. That is how we get this formula. Note down please. So please remember arithmetic mean के लिए 3 numbers are in arithmetic progression. Arithmetic mean related to arithmetic progression. Capital A का formula है x plus y upon 2. Geometric mean means it is related to geometric progression. ठीक है. और कैपिटल G का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ xy और you can remember g square equal to xy, where x and y should be both positive और x and y both should be negative for geometric mean. फिर उसके बाद आता है हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन में the 3 numbers are in harmonic progression. तो हार्मोनिक मीन रिलेटेड टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड कैपिटल H का फॉर्मूला है 2xy upon x plus y. चलो नोट डाउन टिल हियर, देन विल सी द रिलेशन बिटवीन देम. Now let us see the relation between arithmetic mean, geometric mean and the harmonic mean. So if A, G and H are AM, GM and HM of the 2 positive numbers respectively, then the first relation is G square is equal to A into H. And the second relation is arithmetic mean means A, capital A is greater than or equal to capital G is greater than or equal to capital H. So these relations are also going to play a very important role. Capital A means arithmetic mean, capital G means geometric mean and capital H means harmonic mean का notation है. तो G का square करेंगे तो it is same as A into H. And the second result says arithmetic mean is greater than or equal to the geometric mean and the geometric mean is greater than or equal to always the harmonic mean. And then we can note down these results for n numbers. अगर n numbers का arithmetic mean find करना है, then the first one capital A का formula x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn divided by n divided by the number of terms. Capital G n geometric means find करना है तो capital G is nth root of x1 x2 x3 in product till xn, or it can be written this way also, x1 into x2 into x3 and so on up to xn raised to power 1 by n. ये और ये दोनों का सेम ही मीनिंग है. एंड द थर्ड वन कैपिटल H is equal to n upon 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 and so on up to 1 by xn. So these are the results for n numbers. Arithmetic mean n numbers, geometric mean n numbers and harmonic mean n numbers के formulas है. तो चलो note down till here everything. Then we'll move on to the problems that are dependent on harmonic progression and the types of means in that. Okay. Okay students, so let us move on to exercise number 2.4, question number 1. देखो क्या करना है question 1 में, verify whether the following sequences are in harmonic progression. तो हमें चेक करना है कि जो given sequences है वो harmonic progression में है या नहीं है. तो चलो let us begin the solution for the first question. Now first question में हम third sub part कर रहे हैं, the third one. Now if this sequence, we want to check that this sequence is in harmonic progression, तो इसका reciprocal arithmetic progression में होना चाहिए. चलो write down for
the sequence 5, 10 by 17, 10 by 32, 10 by 47. For this sequence to be in HP, so reciprocal of this sequence should be in AP. So reciprocal of this sequence, therefore इसका reciprocal क्या होगा? 1 by 5, 17 by 10, 32 by 10, 47 by 10, and so on should be in arithmetic progression. तो मतलब अगर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो दिस गिवन सीक्वेंस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो कैसे करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये प्रूव कैसे करेंगे? तो T1 मार्क करो, T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड सो ऑन, इट कंटिन्यूस. अब देखते हैं डिफरेंस कांस्टेंट आता है कि नहीं. सॉरी डाउन. देयरफॉर T2 minus T1, तो T2 is how much? 17 by 10 minus 1 by 5. चलो subtract them and find out the difference. फिर उसके बाद हम चेक करेंगे T3 minus T2. तो T3 is 32 by 10 minus 17 by 10. इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आता है. चलो स्टार्ट डूइंग इट. तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो अपॉन में विल मेक द डिनोमिनेटर 10, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड. तो 15, 17 माइनस 2, तो ये आएगा 15 by 10. यहाँ पे भी आप अपॉन में ऑलरेडी 10 है. 32 माइनस 17, 15 by 10. चेक, ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है. आप T4 माइनस T3 भी देखो, दिस माइनस दिस इज ऑल्सो 15 by 10. तो डिफरेंस इज कमिंग कांस्टेंट, डिफरेंस इज कमिंग द सेम. सॉरी डाउन, ऐसा रीजन लिख लो आप. सिंस द डिफरेंस इज सेम, सिंस द डिफरेंस इज सेम, hence 1 by 5, 17 by 10, 32 by 10, 47 by 10, and so on is in arithmetic progression. Now, since this sequence is in arithmetic progression, therefore the given sequence is in harmonic progression. So लिखो, therefore the given sequence, ऐसा लिखो, therefore the given sequence, what is the given sequence? 5, 10 by 17, 10 by 32, 10 by 47, and so on is in harmonic progression. That's it, problem is over. Note down. तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. किसी भी सीक्वेंस को अगर हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं अगर फाइंड करना है, तो वी शुड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट सीक्वेंस. If the reciprocal of that sequence is forming an arithmetic progression, then the given sequence is forming an harmonic progression. That is how we have to verify. चलो नेक्स्ट करें. ये थर्ड हो गया, फिर सेकेंड वाला करते हैं. चलो let us move on to the second example. So for the sequence 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12, and 1 by 24, and so on to be in arithmetic progression. Therefore, the reciprocal of this sequence, that is 3, 6, 12, 24, and so on, should be in AP. फॉर्मेट वही है, T1, T2, T3, T4. अब करो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो 6 minus 3, so that will be 3. Then T3 minus T2, so 12 minus 6 is 6. Is the difference constant? No. So लिखो, since the difference is not same,
hence the given sequence, hence the sequence 3, 6, 12, 24 is not in arithmetic progression. It is not in AP, and therefore the given sequence 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12, and so on is not in HP, is not in harmonic progression. That's it. Problem is over. Same procedure किया है. Since the difference is not coming constant, therefore this sequence is not in arithmetic progression. Therefore this given sequence is not in harmonic progression. Please make a note. Question number 1 is over. So now students, let's move on to the second question. क्या दिया है? Find the nth term and hence find the eighth term of the following HPs. So question 2. Excuse me. Question 2 का हम first example करेंगे. Now they have already given that this sequence is in HP. तो लिखो solution का starting. Since the sequence 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8 and 1 by 11 is in HP. Now since this sequence is in HP, therefore the reciprocal of this sequence, that is 2, 5, 8, 11 and so on, is in arithmetic progression. Now since this sequence is in arithmetic progression, here the value of A is 2 and the common difference is observable 3 है. तो हम क्या करेंगे? Tn find करेंगे. We want to find out the nth term of HP, but we will find out nth term of AP. तो ऐसा लिखो, for arithmetic progression for AP, Tn is equal to what? A plus n minus 1 into D. इसका फॉर्मूला है nth टर्म का. So therefore Tn is equal to A का वैल्यू is 2 plus n minus 1 into difference is 3. कॉमन डिफरेंस 3 है. So therefore Tn is further equal to, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3n minus 3 plus 2 is minus 1. So this is the nth term for AP. So therefore for HP, Tn is its reciprocal, इसका reciprocal हो जाएगा तो 1 upon 3n minus 1. This is nth term of harmonic progression. So it's very simple. Nth term of AP find करना है, उसका reciprocal लेना है. This is nth term of HP. So we have found out the nth term of HP. Now we also want the eighth term. So eighth term के लिए n का value 8 डालो. So therefore T8 is equal to, तो n का value 8 डालो. So 3 8s are 24. 24 minus 1, 1 by 23 is the eighth term. Problem is over. Note down. Now let us move on to the second example. Now this example, as you can see, I have marked a star because this is a textual example. Actually exercise में नहीं है, but this kind of examples can be asked. जो textual examples है आप very easily कर सकते हो. तो ये star वाला problem mark करेंगे. It's an extra problem. So just note down. Now this sequence, since the sequence 1 by 2, 2 by 5, comma 1 by 3, comma 2 by 7 are in HP. So therefore it's reciprocal. What is the reciprocal of this? 2, comma 5 by 2, comma 1 by 3, comma 7 by 2 is in arithmetic progression. So here the first term is 2 and the difference, you subtract any two terms. तो ये 5 by 2 minus 2 करते हैं. So 5 by this minus this करेंगे तो ये आएगा अपने को, we get difference is 1 by 2.
You subtract any two consecutive terms, difference is going to come the constant or same. अब for AP TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो TN का फॉर्मूला है A plus n minus 1 into difference, that difference is 1/2. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 plus 1/2 मल्टीप्लाइड ओवर हियर, तो ये हो जाएगा n/2 minus हाफ. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे. चलो सिंप्लीफाई करो, जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. विल राइट डाउन इन द इजीएस्ट फॉर्म दैट इज पॉसिबल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 minus half, तो 2 minus half will give us nothing but 3/2. 3/2 plus n/2 remaining same, which can be written as 3 plus n divided by 2. ठीक है, अब this Tn is for AP, but we want the nth term for harmonic progression. So what will be Tn? इसका reciprocal 2 upon 3 plus n. This is nth term of harmonic progression. We have found out the nth term. Now we want the 8th term. तो n का वैल्यू 8 डालो, तो n का वैल्यू 8 डालेंगे तो 2/11 is the 8th term of this sequence, which is in HP. Right on, problem is over. I have taken an extra problem, the second one. Textual examples are very simple, वो तो आप खुद भी कर सकते हो. ऐसा फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है. Note down, then we'll move on to the next question. चलो, now let us move on to question number 3, 4 and 5. These are also simple problems. Solution for third one. Now they are all dependent on relation. एक ही फॉर्मूला यूज करना है तीनों में. G square is equal to A into H. तो देखो थर्ड वाले में find AM means capital A, GM means capital G and HM means capital H. तो A find करना है. What is given? थर्ड वाले में चलो लिखो given. किसका वैल्यू दिया है? कैपिटल G का वैल्यू is given as 4 and capital H का वैल्यू is given as 16/5. And we want to find out the value of capital A. Capital A का value find करना है. So write down formula. We know that G square is equal to A into H. So therefore A is equal to G square upon H. Capital A का value ही तो find करना है हमें. Substitute करो and solve it. So therefore capital A is equal to G का square, तो 4 का square is 16. 16 divided by 16/5. 16 cancel, तो आंसर is 5. 1 upon 1/5 बचेगा ना. तो कैपिटल A का वैल्यू is 5. That is arithmetic mean is 5. थर्ड क्वेश्चन इज ओवर. फोर्थ पे जाते हैं. फाइंड HM of the two positive numbers whose AM and GM is given to us. तो ठीक है, वही फॉर्मूला थोड़ा डायरेक्टली करते हैं. वी नो दैट G square is equal to A into H. क्या फाइंड करना है? HM. तो therefore from here capital H is G square divided by A. How much is G? G is given as GM. GM is 6. तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A. AM is 15/2. तो अपॉन में है 15/2. तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज 36 इंटू 2/15 हो जाएगा. रेसिप्रोकल ऑफ 15/2. इसको सिंप्लीफाई करो तो दिस विल गो 3 times. 3 5s are 3 12s are. तो 24/5 is the value of H, or you can say the harmonic mean is 24/5. Problem is over. वैसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं. सिंपल क्वेश्चन से डायरेक्टली कर रहा हूँ. वी नो दैट, फॉर्मूला तो वही है, G square is equal to A into H. Therefore G square will be equal to, how much is A? Arithmetic mean is 75.
and harmonic mean is 48. So therefore G is nothing but equal to under root of 75 into 48. चलो multiply करो 75 into 48. Start multiplying. 75 multiplied by 48. 8 5s are 40. 4 carry forward. 56 plus 4 60. 5 4s are, फिर ये हो जाएगा 20 28 30. So this is 3600. G का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 3600. तो G का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3600 इज नथिंग बट हाउ मच हो जाएगा? इट विल बी 60. दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. तो क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 इज ओवर. नोट डाउन. एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है, लिख लो. Okay students, now let us move on to question number 6 and 7 one by one, beginning with the sixth one. इसका solution देखते हैं. Insert two numbers between 1 by 4 and 1 by 13 so that the resulting sequence is in HP. तो चलो write down solution for sixth problem. लिखो, let 1 by H1 and 1 by H2 be the two numbers to be inserted. Let this be the two numbers that are to be inserted. Therefore 1 by 4 comma 1 by H1 comma 1 by H2 comma 1 by 13 are in harmonic progression. They are in HP. Chalo, write down till here. Now, since these numbers are in HP, their reciprocal will be in AP. We have done that. So therefore, 4 comma H1 comma H2 comma 13 are in arithmetic progression. Now we want to find out H1 and H2. अब ये हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं. This is 4 and this is 13. So it is increasing by 3. Difference 4 plus 3 7, 7 plus 3 10, 10 plus 3 13. तो H1 H2 मिल गया, but directly लिखना allowed नहीं है, तो we'll show the steps. So here this is nothing but our T1. मतलब ये A का वैल्यू है. And this is nothing but our T4, T1, T2, T3, T4. तो Tn का फॉर्मूला यूज करके हम डिफरेंस निकालेंगे. ये वर्किंग आपको एग्जाम में शो करना पड़ेगा. MCQ है तो ओरली हो सकता है. तो वी नो दैट Tn का फॉर्मूला इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये D फाइंड करना है हमें. Therefore T4, so T4 is equal to A. A का वैल्यू इज 4 प्लस 4 minus 1 into D. Now how much is T4? T4 is 13. So 13 is equal to, ये आप इसको simplify करो, so this will become nothing but 4 plus 3D. So therefore from here 3D is equal to 9. So therefore difference is 3. Now since the difference is 3, what will be H1 and H2? H1 will be 7 and H2 will be 10. So likho, therefore H1 is 7 and H2 is 10. And therefore 1 by H1. Therefore 1 by H1 is 1 by 7 and 1 by H2 is nothing but 1 by 10. So therefore two numbers to be inserted are, therefore two numbers to be
inserted are, which are the two numbers that are to be inserted? 1/7, 1/10. यहाँ पे 1/7, 1/10 आएगा. So this sequence will be in harmonic progression. चलो note down, problem is over. तो obviously students, if it's a multiple choice question, ये आप यही सेम चीज ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो. 1/4, 1/7, 1/10 and 1/13 can be done by observation also. Let us move on to the 7th question. Insert two numbers between 1 and -27 so that the resulting sequence is a GP. Let the two numbers to be inserted. Yeah, let G1 and G2 be the two numbers to be inserted. Therefore, 1, G1, G2, -27 are in geometric progression. अब देखो, अब हमें R का वैल्यू फाइंड करना है. तो R का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है so that we get G1 and G2. हम थोड़ा सा लॉजिकली भी हम कर सकते हैं. We can do logically also and we can find out G1 and G2. Now think of one such real number कि जिसको आप मल्टीप्लाई कर 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है so that you reach -27. तो भी आप सोचो 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे so that we get till -27. Think of that number. मिला क्या रेशो? पहले ओरली करके बताता हूँ, फिर एक्चुअल वर्किंग पे जाएंगे. तो देखो R का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे R का वैल्यू आपको मिलेगा -3. चेक 1 into -3 is -3. -3 into -3 is 9 and 9 into -3 is -27. तो हमें क्या सोचना है? 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -27 मिलेगा. दिस विल अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिस ऑफ एग्जांपल्स. तो ये R डायरेक्ट मिल गया हमें, बट अगर एमसीक्यू नहीं है तो डायरेक्ट नहीं चलेगा, प्रोसीजर हमें शो करना पड़ेगा. So now let us see the actual procedure for the problem. So this is the first term, that is A, and this is the fourth term, that is -27. Now since it is in GP, तो GP का formula use करेंगे. So write down. We know that Tn is equal to A into R raised to n-1 हो जाएगा. So therefore, T4 will be equal to A is how much? A is 1 into R raised to n-1. So 4 minus 1, so 3 हो जाएगा. So therefore, how much is T4? T4 is -27. So -27 is nothing but equal to R cube. So now simplify and find out the value of R. And so therefore, कैसे लिखेंगे इसको? तो R cube will be written as -3 का cube is -27. So therefore, from here R का value is -3. देखो जो हमें डायरेक्ट मिल रहा था वो वर्किंग से मिला, बट अगर MCQ नहीं है तो वर्किंग आपको शो करना पड़ेगा. तो चलो राइट डाउन R का वैल्यू -3. नाउ एक्चुअली तो वी वांट टू फाइंड आउट T2 एंड T3. तो इसमें इनका वैल्यू 2 डालना है, A का वैल्यू और R का वैल्यू, बट डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम. कैन बी डन. सो द टू नंबर्स आर नाउ 1 into -3. तो ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं. यहाँ पे जैसा किया था वैसा करने की जरूरत नहीं है. सो राइट डाउन. देयरफॉर G1 is 1 into -3 is -3 and G2 is, now this is -3, so -3 into -3, so G2 is 9. So G1 G2 मिल गया. तो लिखो फाइनल आंसर
Therefore, the two numbers to be inserted are, therefore, two numbers to be inserted are -3 and 9, so that this sequence forms a geometric progression. Problem is over. Note down. Now students, let us move on to the 9th question. Now 8th and 9th, they are of similar type. I'm doing the 9th one. 8th one you will do it as homework section. Okay. Important problem. The weightage of this problem is nothing but 4 marks. Chalo, write down. Solution for the 9th example. Find two numbers. तो ऐसा लिखो. Let the two positive numbers be. Let the two positive numbers be x and y. अब उसने कंडीशंस दिए हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. फाइंड द टू नंबर्स हुज am exceeds their gm by half. तो am means कैपिटल A. तो लिखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, कैपिटल A am exceeds their gm by how much, तो by half. तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, कैपिटल A इज इक्वल टू G प्लस हाफ. इफ यू एंड देयर HM by 25 by 26. तो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड टू नंबर्स हुज AM exceeds their GM by half and AM exceeds their HM by. So according to second condition, AM arithmetic mean exceeds their HM by 25 by 26. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2. नंबर दिस इज 1 एंड दिस इज 2. दोनों स्टेटमेंट को उसने कंबाइन करके दिया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. AM exceeds their GM by half and AM exceeds their HM by 25 by 26. अच्छा, अब इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, G² इज इक्वल टू A इंटू एच. नाउ हियर यू नीड टू रिमेम्बर, जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आइदर कैपिटल G, या सभी इक्वेशंस को कैपिटल G के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या सभी इक्वेशंस को कैपिटल A के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या सभी इक्वेशन को आप कैपिटल H के फॉर्म में कन्वर्ट करो. कैसे भी करो चलेगा. चलो, first write down till here. So what we'll do, let us convert everything in terms of capital G. capital G में convert कर लेते हैं. ठीक है. तो now you observe G² तो है हमारे पास, कैपिटल A का वैल्यू G के टर्म्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है. अभी हमें कैपिटल H का वैल्यू चाहिए G के टर्म्स में. आई एम कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ G. तो कैपिटल A का वैल्यू G के टर्म्स में है, कैपिटल H का वैल्यू G के टर्म्स में चाहिए. तो व्हाट विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 and 2, माइनस माइनस माइनस. तो A माइनस A इधर आ जाएगा 0 इक्वल टू, हियर वी विल गेट G माइनस H एंड दिस विल बी 1 by 2 माइनस 25 by 26 हो जाएगा. Therefore 0 is equal to G minus H. इसको आप LCM लेके सॉल्व करो तो 13 minus 25 is minus 12 by 26. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 13. LCM ये दोनों टर्म का हमें LCM लेना है. तो 13 minus 25 is minus 12 by 26. minus 12 by 26 can be simplified. इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो.
So therefore या ऐसा करो, you can shift this h over here. Therefore capital H is equal to G minus 12 by 26 को आप reduce करो, तो 6 by 13. This is value of capital H in terms of G. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3. चलो write down till here. Now we'll use this relation. तो अभी इसके आगे लिखो, we know that G square is equal to A into H. Therefore G square is equal to, how much is A? A in terms of G. So A is G plus half and H in terms of G. तो ये G minus 6 by 13 है. चलो now let us take LCM within the bracket. तो क्या हो जाएगा? Therefore G square is equal to, this will become 2G plus 1 upon 2 and this is 13G minus 6 upon 13 हो जाएगा. चलो please write down till here. I'll divide this into 3 parts. ऐसा कर लेते हैं इसको, ये रिलेशन में रब कर देता हूँ. I've already written it over here, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें. ठीक है, चलो now क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 2 into 13 26, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. Therefore 26G square is equal to, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 2G plus 1 into 13G minus 6. Now open up the brackets on the right hand side. So therefore 26G square is equal to 13 2s are, तो हो जाएगा 26G square minus 12G plus 13G minus 6. ये 26G square कैंसिल हो गया. Therefore 0 is equal to, this is G minus 6. So therefore capital G का value is 6. Now we have found out the value of capital G. Now we will need the value of capital A and capital H. चलो, but before that please write down till here. Capital G तक आप लिख लो working. Now you write down, put G equal to 6 in इक्वेशन नंबर 1. तो कैपिटल ए का वैल्यू मिलेगा. एंड इन इक्वेशन नंबर 3, तो फिर वहां से कैपिटल एच का वैल्यू मिलेगा. चलो सॉल्व इट. तो क्या वैल्यू मिलेगा? देयरफॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू, जी का वैल्यू 6 डालेंगे तो 6 प्लस हाफ 12. तो दिस इज 13 by 2 कैपिटल ए का वैल्यू. एंड इक्वेशन 3 में डालेंगे तो कैपिटल एच का वैल्यू इज जी माइनस 6 by 13. जी का वैल्यू है 6 माइनस 6 by 13. तो 6 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 by 13 बचेगा, तो दैट इज 12 by 13. तो 12 6 72 by 13 इज वैल्यू ऑफ कैपिटल एच. चलो राइट डाउन टिल हियर. कैपिटल ए और कैपिटल एच का वैल्यू मिल गया हमें. So I hope everyone must have reached till here. Now we will use the formula of capital A, capital G and capital H. है ना? तो आगे लिखो, we know that, अभी कैपिटल A का फॉर्मूला लिखो. कैपिटल A is x plus y by 2. कैपिटल G का फॉर्मूला लिखो, G is equal to अंडर रूट ऑफ xy. या चलो ठीक है, या ऐसा लिखो, जी स्क्वायर इज एक्स वाई. रूट मत लिखो, रूट को एलिमिनेट करना पड़ेगा. जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई एंड कैपिटल एच इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई.
नाउ कैपिटल ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. हाउ मच इज कैपिटल ए का वैल्यू? तो लिखो देयरफॉर 13/2 is equal to x plus y/2, कॉमा g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 6, तो 36 is equal to xy and capital H का वैल्यू is 72/13 is equal to 2xy upon x plus y. ये तीन इक्वेशंस मिलेंगे. नाउ वी हैव नंबर्ड दिस एज 3, राइट? तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे. देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट? x plus y is equal to 13 मिलेगा हमें पहले वाले इक्वेशन से. ये अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. एंड फ्रॉम हियर x into y is equal to 36. Number this as equation 4 and this as equation 5. अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो क्या करते हैं, y का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं. तो देयरफॉर x विल रिमेन सेम, y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. तो व्हाट विल बी y का वैल्यू? 13 minus x and this is equal to 36. ये y का वैल्यू हमने यहाँ पे डाला. y is 13 minus x. You know how to solve it. Open up the bracket, so this will become 13x minus x square is equal to 36. So therefore x square minus 13x plus 36 is equal to 0. इस quadratic equation को factorize करो and find out the values of x. चलो do it. Simple quadratic equation है, इसको आपको factorize करके x के values निकालने हैं. तो clearly visible. 9 4s are 36. तो what are the values of x? एक तो x का वैल्यू है 4 और जो दूसरा x का वैल्यू है वो है 9. अभी x के वैल्यूज मिल गए तो y के वैल्यूज भी मिल जाएंगे. तो we will substitute in equation number 4. तो लिखो क्या आएगा? When x is 4, so when x is 4, y is 9, and when x is 9 at that time, y will be 4. चलो write down. So what are the two numbers? The two numbers are 4 and 9. तो लिखो final answer. वही तो find करना था. Find the two numbers. So write down final answer. The two numbers are 4 and 9. Problem is over. Factorize करते आता है ना आपको? चलो फिर भी कर ही देता हूं मैं. x square, this will be written as minus 4x minus 9x plus 36 equal to 0. x taken common, x minus 4 minus 9 taken common, x minus 4 equal to 0. x minus 4 into x minus 9 is equal to 0. So therefore x minus 4 is 0 or x minus 9 is 0. Therefore x is 4 or x is 9. This is how you get the working. Quadratic equation तो आपने किया हुआ ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में. चलो नोट डाउन. प्रॉब्लम इज ओवर. तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया कि ये जो कंडीशंस उसने दिए हैं वो सबसे पहले आप प्रॉपरली लिखो. देन ऑलवेज यूज द रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच. ये रिलेशन यूज करना है एंड कन्वर्ट एवरीथिंग आइदर इन फॉर्म ऑफ कैपिटल जी और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ए और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एच. कैसे भी करो, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है. हमने कैपिटल जी में सब कुछ कन्वर्ट कर लिया, वहां से जी का वैल्यू निकाला, फिर ए और एच का वैल्यू निकाला. देन वी हैव यूज्ड द फॉर्मूलेज ऑफ ए जी एंड एच. वहां से दो इक्वेशंस मिले, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. वी हैव गॉट द टू नंबर्स एक्स एंड वाई. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. प्रॉब्लम इज ओवर. So students, with this question number 9, we have finished off with the exercise number 2.4 also. So next time when we meet, we move on to the next concept. But by that time, please keep studying and keep watching my YouTube channel. Thank you very much.